Now, whenever I talk about cancer, I always remember what my friend says, what my friend who is a cancer specialist says. She says that while other diseases while other conditions like high blood pressure or diabetes can only be controlled, it is only cancer which can be cured. Now that's such a positive statement to begin our talk today with. Now, what is cervical cancer? The lower part of the womb or uterus is called cervix. Cancer of the cervix, of this portion of the womb, is the commonest cancer for women in India. वर्ल्ड में जितने भी सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं उसमें एक चौथाई भाग इंडिया से होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये क्यों होता है। 1, लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी ना होना। 2, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस जैसे रेगुलर ना नहाना। 3, अर्ली एज ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स, अगर रेगुलरली सेक्स 20 साल के पहले होता है तो कैंसर का चांसेस थोड़ा बढ़ता है। 4th, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। एंड 5th, रेगुलर चेकअप ना करना। डू यू नो अबाउट द बेस्ट थिंग of cervical cancer? It is that it's a completely preventable cancer. It's almost 100% preventable cancer. शायद एक ही कैंसर है जिसका एक definite pre-cancerous stage है, उसको अगर डिटेक्ट किया जा सकता है या उसको अगर ट्रीट किया जा सकता है तो ये कैंसर 100% preventable हो सकता है. So if a precancerous condition is detected through a pap smear, that can be completely treated, and hence and thus the cancer, cervical cancer, can be prevented. Now, pap smear should be done ideally along with an HPV testing, which is a human papilloma virus testing. Between 20s and 30s, it should be done at least once in 3 years. And if both HPV and pap smears are negative, then beyond the 30s, it can be done once in 5 years. Now, I know that this sounds a little uncomfortable test, and it is a little uncomfortable, and this is the reason why you as a young girl or a young woman do not come to us for this test. But believe me and remember that a few minutes of discomfort can go a long way in earning you the rewards of preventing yourself or protecting yourself from cancer and some other conditions also which can lead to infertility. Vaccination कैसे काम करता है to prevent a cancer? Now, your vaccination of cervical cancer has an antivirus. ये वायरस कैंसर, cervical cancer का मूल जड़ है. So, ये वैक्सीनेशन के जरिए ये कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं by killing that virus or by increasing your immunity to fight against that virus. So, ये HPV वायरस आपके शरीर में कैसे आएगा? Through vaginal sex, through oral sex or through anal sex with anyone who has the virus. और ये वायरस कोई symptoms नहीं देता है, so you will not come to know whether your partner has an HPV infection or not, and you will not know whether you are getting infected from that partner. कोई भी औरत जो sexually active हो उसको ये cervical cancer हो सकता है because it is considered to be a sexually transmitted disease. ये सिंगल पार्टनर से हो सकता है या मल्टीपल पार्टनर से भी हो सकता है. रिस्क इज हायर विद मल्टीपल पार्टनर्स. ये इमीडिएटली हो सकता है या हो सकता है कि ये काफी सालों के बाद आ सकता है. सो द बेस्ट वे टू डील विद दिस वायरस इज टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट दैट वायरस. खुद के इम्यूनिटी को इतना बढ़ाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अगर वायरस आ भी गए तो उसको आप अपने अंदरूनी शक्ति से फाइट कर सकते हो, अपने अंदरूनी शक्ति से उसको शरीर से बाहर कर सकते हो. एंड हाउ विल यू इंक्रीज दिस इम्यूनिटी? ऑफ कोर्स आपको अच्छा पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस मेंटेन करना पड़ेगा, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा. सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन आपको आपका इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा एंड इट विल हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट द वायरस. ये 3 डोजेज में आता है. सो इफ यू टेक इन जनवरी, द सेकेंड डोज विल कम इन मार्च एंड द थर्ड डोज विल कम इन जून.
So the schedule is that starting month में एक पहला डोज होता है, फिर 2 महीना आफ्टर द स्टार्टिंग मंथ एंड फिर 6 महीना आफ्टर द स्टार्टिंग मंथ. Now what is the best time to take the cervical cancer vaccination? Before one gets sexually active. So 15 साल के पहले, ये adolescent vaccination के शेड्यूल में आता है. 15 साल के पहले only 2 doses are needed, so only the first and the second doses are needed. अगर आप ये टाइम पीरियड मिस किए हैं तो भी आप ले सकते हो ये वैक्सीनेशन. Recommendation is up to 26 years of age. Even after that, one can choose to take the cervical cancer vaccination after speaking to your doctor. Especially आपका कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे आपका कोई भारी बीमारी हो, जैसे टाइप 1 डायबिटीज या ल्यूपस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या HIV हो, अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी नोन HPV इन्फेक्शन हो, तो आप 45 इयर्स तक भी ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ले सकते हैं. बट earlier the better. So what are the side effects of cervical cancer vaccination? Well, they are minor side effects like any other vaccination. थोड़ा redness हो सकता है, जरा injection site में pain हो सकता है, हल्का सा सूजन आ सकता है, rarely कभी-कभी fainting attacks या vision difficulties हो सकता है, but these are generally very minor effects and very temporary effects. But one very important point to remember is that even after vaccination आपको रेगुलरली पैप्समियर टेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको वो प्री कैंसरस स्टेज का पता चल सकता है और जिससे आपको वो ट्रीट करके कंप्लीटली सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं. आप सबको कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में पता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. So similarly, please remember that cervical cancer vaccination is also very important for every woman, for every little girl, for every female friend of yours. It is very, very important that you take the cervical cancer vaccination. So get this knowledge, spread the knowledge, and get yourself vaccinated. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.